A cheerful good morning to all. Today we will going to study science. Okay. The first chapter is sources of food. The first of all, I am saying you the science book. This is a science book of class 6th. Okay, as you can see this, mastering science. So the first chapter is sources of food. So let's read this. A machine or an engine needs energy to work, or a car get energy from burning petrol or diesel. Similarly, living things are also needed energy to grow and to do various activities. Living things get energy from the food they eat. Food is the fuel for our body because it gives us energy. It gives us energy. We need food to get energy to work and play, get nutrients for the growth, maintenance and repair of food cells, protect us from diseases and be fit and healthy. This is a point of we need food too. हम फूड से हम क्या रह सकते हैं, क्या मिलता है? तो इसी के साथ हम करते हैं अपने पॉइंट स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक लिख लेते हैं. वी नीड food too. Okay, let's start this. Get energy. To work and play. Okay. Second point is get nutrients. For the growth. Maintenance. And repair of body cell. And the third point is protect us. Protect us from. अगर आपकी मर्जी हो तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं प्लीज. From diseases and be fit and be fit and healthy. Okay. आज का हमारा टॉपिक ही यही हो गया. The first chapter sources of food and the first thing is we need food too. Okay. The first point is we need food to get energy to work and play. We need food to get nutrients for the growth, maintenance and repair of body cells. And the third point is we need food to protect us from diseases and to be fit and healthy. As you can see this. Please, you can read this chapter. Okay. Second is food variety. Second is food variety. This is second point. This is the first. This is the second. देखो फर्स्ट पॉइंट के तो ये होंगे ABC. अब ये है फूड वेराइटी. as you can see, the food items are made of different materials. जो फूड वेराइटी होती है
उसके बारे में बताया हुआ है नीचे कि द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो फूड आइटम होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो टी बनाते हैं, टी के लिए हमें टी लीव्स चाहिए होगी, शुगर चाहिए होगा एंड मिल्क, वाटर। ओके, अगर आपको और अच्छी बनानी है तुलसी, अदरक एक्सेट्रा वी नीड। ओके, इसमें यही है, द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ये तो सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कुक राइस एट होम we take raw rice and boil them in water. Thus, rice and water are two ingredients of boiled rice. Okay. Next is some food items are made with many ingredients. For example, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetable, salt, spices, and oil. As you can see. Okay, नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1, और उसका ऊपर का क्या है, लाइन्स होती है जो ऊपर की ब्लैक लाइन दे रखी है, डार्क लाइन है। राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ओके, इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स बताने हैं फूड आइटम। जैसे हमें चपाती बनानी होती है तो चपाती में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती है इसमें आपको बताना है। चपाती में जैसे आटा एंड वाटर होता है। वैसे ही इडली में क्या होता है, बट इडली आपने खा रखी होगी, है ना, मैंने भी खा लिया। तो बताओ उसको कैसे बनती है, हाउ। यस, सूजी एंड कर्ड से। वेरी गुड। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सूजी एंड कर्ड। नेक्स्ट इज सैंडविच। सैंडविच किससे बनता है, दैट ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, है ना। और दाल कैसे बनती है, पल्सेस एंड वाटर एंड स्पाइसेस, आपने देखी होगी। So next point is sources. Sources of food. Okay? इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि हमारे मेन पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं जरूर। कि अगर आपसे कोई पूछे फूड सोर्सेज ऑफ फूड में कितनी हेडलाइंस थी तो आप बता सकते हो कि सोर्सेज ऑफ फूड था एंड फूड वैरायटी थी, और जो मशीन वाला मैंने पढ़ाया था वी नीड फूड टू, वो वाली हेडिंग्स थी। ठीक है, अभी और भी हमारी हेडिंग्स है तो पहले सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थ्रो वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम। अब आपने सोचा तो होगा, आपने नोट तो किया होगा कि जो हम फूड खाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, है ना, सोचा तो होगा सबने। तो अब यही बात हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज सोर्सेज ऑफ राइस, प्लांट्स ऑफ कॉसेस, वेयर डू मिल्क, एग एंड मीट कम फ्रॉम, एनिमल। सो वी गेट फ्रॉम आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फिर एनिमल से मिलते हैं या फिर हमें प्लांट से मिलता है। तो यही लिख लेते हैं, यही हमारा ए पॉइंट है इसका सोर्सेज ऑफ फूड का। वी get our food from plants and animals. Plants and animals. Okay, this is a point. तो यहीं पे हमारा सोर्सेज और फूड भी खत्म हो गया। ओके, अब आपको ये ना, अभी तो आप घर बैठे बैठे देख रहे होंगे ये वीडियो या फिर स्कूल में मैम चला रही होगी, बट अगर आपको ये अच्छी तरह से लर्न करना है ना तो आप फटाफट से कॉपी कर लो भाई, इतना अच्छा चैप्टर नहीं मिलेगा लर्न करने को। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स। Okay, the second topic is food from plant. I love this. The fourth
plant is food from plant. अच्छा, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी, पर आपको ये अच्छी तरह से रीड करना है और आपको बताना है हमने क्या पढ़ा है. ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.